Hope you are able to hear me. Am I audible to all of you? Good evening to everybody. Today we're going to talk about the last and final part of the state of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. Last week I was not able to do the live streaming because there is some emergency that has happened. Because of that, I had to postpone. Today we are going to talk about the next part and the final part of the state of Tamil Nadu and Governor of Tamil Nadu. Now, this case इट्स अ वेरी लेंथी केस. आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल दिस केस. ठीक है, इस केस के बारे में बहुत इन डिटेल में मैं बात किया हूँ. बट उससे पहले मैं कुछ चीज बता देता हूँ. आई हैव मेड ए वीडियो वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट 5 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ केसेस that is important for your CLAT PG 2026. If you haven't checked those videos, kindly do check that. ठीक है. दूसरा, AMU केस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं. That you can check that. Second, you can talk about this case is also very important, very lengthy case, and has various parts to it. Okay, I have talked about in detail also. तो उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो. ठीक है. Now, having said that, आज हम लोग इस केस को जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं. द जुडिशियल रिव्यू, डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर का जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. नाउ, जब हम लोग अभी तक स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु की बात किए हैं, आई हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द अदर एस्पेक्ट. ठीक है. नाउ, I'm not getting into the facts of the case again, but rather than I'm going to give you a brief overview of whatever I have shared with you. Okay. So it's a matter of state of Tamil Nadu and Governor of Tamil Nadu, where the clash between state of Tamil Nadu and Governor of Tamil Nadu. The matter is very simple and yet so complicated. क्योंकि मैटर ये था कि state of Tamil Nadu passed various legislations, sent it to governor, but the governor was not giving his assent, which he is required to give under Article 200, and he is sending it for presidential reconsideration. That was the main reason for having this particular case. Now, this case is not limited to this only. Why? Because each and every state are facing this issue. The governor is not giving the assent, okay? But simultaneously, the each and every legislation that are being passed by the state legislature, that is pending for inordinate delay, and nobody knows when it's going to be basically when it is going to be enacted. Okay, so lot of legislature, they are facing this kind of issue. So state of Tamil Nadu is not only the one. अब कोई भी स्टेट के बारे में जहां पर करंट रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस this kind of issue they are facing, and vice versa also. Now, having said that, this state of Tamil Nadu approached the Supreme Court, and Supreme Court basically is going to interpret Article 200. ठीक है. Article 200 के बारे में हम लोग देखे थे. what are the possible course of action under Article 200 that people have, the governor have. So we have seen there are 3 possible courses of action. One is basically assent, another is withhold and return, and third is giving the presidential consideration. That we have seen it. Okay, हम लोग उसको देखे थे, हम लोग बात किए थे in detail. That issue is very important. The first, second, and third issue are very, very important, by the way. Fourth, fifth is also important, but first, second, third are quite important. Okay, quite important. So guys, for that definitely आप लोग उससे क्वेश्चन करोगे. ठीक है. मैं लास्ट क्लास में एक चीज पूछा था कि आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर्टिकुलर केस से क्वेश्चन आंसर बनाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं. आपका जवाब कुछ नहीं आया कमेंट बॉक्स में. ठीक है. बट डू लेट मी नो. ठीक है, डू लेट मी नो वेदर यू लाइक टू हैव मी a session on question answer on this particular case. ठीक है. This case is very lengthy, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कस करेंगे. इस केस के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्या क्या हो सकता है. So give me yes on the chat box if you are really willing me to do that thing, so that we can have a differentiation on that. ठीक है. Now, अभी हम लोग जो 5th इश्यू के बारे में बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स डिस्क्रिशनरी पावर, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए. ठीक है, उसके बारे में इसके ऊपर बात करेंगे. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स
discretionary power. Okay. Now, I'm going to share the screen with you, and you're going to tell me whether it's visible to you or not. Okay. And simultaneously, the other aspect that needed to be understood, that we have talked about Article 163, which is important. We have talked about Article 74, which is important. Article 74 is related to president. Article 163 is related to governor. ठीक है. तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि आर्टिकल 74 एंड 163 दोनों मामले में ही कहीं ना कहीं द सिमिलरिटीज कैन बी फाउंड, बट फॉर अ गवर्नर फ्यू डिफरेंट थिंग्स हैव बीन गिवन. ठीक है. सो गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे क्यों गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर दिया गया था अंडर आर्टिकल 163. ठीक है. आज हम लोग बात करेंगे जो एक्स्ट्रा पावर दिया गया है गवर्नर को अंडर आर्टिकल 163, उस पावर का जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे. एंड इन जनरल जो प्रेसिडेंट का पावर रहता है और गवर्नर का पावर रहता है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे. क्योंकि द main thing that needed to be there, we are talking about judicial review of governor's action or president action. Think about it. क्योंकि ये कोई एक नॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, एक कोई अदर ऑफिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. दैट इज गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट. देयर एक्शन इज गोइंग टू बी रिव्यूड. टू व्हाट एक्सटेंट? ओके. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एंड दैट्स व्हाट द मेन क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. कि क्वेश्चन ये था जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ओके. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. वन सेकंड. वन टीचर इज कॉलिंग मी. वन सेकंड. So one very important thing is that we are talking about judicial review of titular heads, right? Governor or president. Okay. तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं? The reason is very simple. The reason is these titular heads are not other constitutional authorities that we know of. ये titular heads or symbolic heads, they are the head of the country or the state. ठीक है. जब हम लोग head of the country or the state की बात करते हैं, ठीक है, this needed to be reviewed or needed to be seen totally different. ठीक है. इसीलिए गवर्नर का एक्शन यहां पर रिव्यू होने वाला है या नहीं, उसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल. ठीक है. हम लोग इसके बारे में इन डिटेल में बात करते हैं एक एक करके. ठीक है. एक मिनट रुको, एक सेकंड. ओके. yeah, I hope it's visible to all of you. Give me yes if it's visible to all of you. ठीक है. So this is the very important issue that we're going to talk about, whether the exercise of discretion by the governor in discharge of his function under Article 200 of the Constitution could be set to judicial review or not. Now, so the function of Article 200 is under the scanner of judicial review or not. That is the most important question to be talked about on this issue. इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या समझते हो आप लोग? आप लोगों के दिमाग में जुडिशियल रिव्यू का टर्म सुनते ही क्या क्या चीज आपके दिमाग में आता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड? ओके. कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू हियर मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू? इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग? क्या समझते हो जुडिशियल रिव्यू मतलब? जुडिशियल रिव्यू मतलब आप can you talk about what do you understand by judicial review? So is there any article that you are aware under which judicial review is given to judicial review judiciary? ऐसा कुछ आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना. ऐसा कुछ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कोई आर्टिकल दिया ही नहीं गया है? ठीक है. सो जुडिशियल रिव्यू की जब हम लोग बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशरी इन विच जुडिशरी हैज द पावर टू रिव्यू द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर्स. ओके.
And to have a proper check and balance in the democracy, judicial review power is given. Okay. Now, judicial review, one of the most important facet of judiciary or Indian judiciary. Now, बात ये आ रहा था जो मैं पहले आप लोगों को बोला कि whether governor or the president, they are the titular heads of the country, can their action be under the scanner of judicial review? ओके क्योंकि आप अगर एक गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, उनके एक्शन अगर जुडिशियल रिव्यू में आ रहा है, सो ये बहुत डिफरेंट चीज है, ठीक है. एंड इफ यस देयर power is or their actions are under the parameters of judicial review, what are the parameters? ठीक है, what are the parameters? Now here Justice Pardiwala started with a beautiful line, be you ever so high, the law is above you. So a president ho ya governor ho, law is above you. That's what he tried to mean. And first and foremost thing, here Justice Pardiwala tried to find out one very interesting aspect. ठीक है, उन्होंने ये कोशिश की कि आप अगर देखोगे जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 163, ठीक है, under article 163 you open the text, you will be able to see article 163, there is a discretionary power that is given to governor, right? And that discretionary power can be found to article 200 also. When second proviso में हम लोग बात करते हैं article 200 के, जब एक कोई भी बिल गवर्नर के पास आता है, गवर्नर उसको इस बिल को देखने के बाद अगर feels like or has the subjective opinion that this bill has the potentiality to derogate the constitutional mandate and power of high courts, and then that will send for the presidential reconsideration. Okay, इसमें subjective satisfaction दिया जाता है आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर को. सो दिस डिस्क्रिशनरी पावर अगर गवर्नर को दिया गया है, तो whether it is coming under the judicial review or not, that needed to be understood. Now, this discretionary power, when we are talking about discretionary power, so Justice Pardiwala tried to find out whether is there any chance the power and the action, power that has been given to governor or president, has it been reviewed or under the scanner of judicial review before in any of the case under different constitutional provision. क्यों जस्टिस पर्दीवाला ये देखना चाहते थे कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव सो मेनी डिफरेंट पावर्स. आप एग्जीक्यूटिव पावर तो रहता ही है, लेजिस्लेटिव पावर भी दिया जाता है ऑर्डिनेंस के मामले में, पार्डनिंग पावर दिया जाता है. देयर आर सो मेनी पावर्स दैट हैव बीन वेस्टेड with the president governor. But the thing is that are these power under the scanner of judicial review or not? So Justice Pardiwala basically article 200 को 200 के अंदर judicial review ढूंढने से पहले और उसको प्रूव करने से पहले what he tried to find is there any other article where judicial review has been given or has been basically Supreme Court has found out the action of the governor is under the scanner of judicial review. ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, जस्टिस पर्दीवाला ये ढूंढने की कोशिश की. तो ये जब basically he tried to find out, he found out few very important cases. आप लोगों को पता होगा या नहीं, under article 72 and 161 these are pardoning power respectively for president and governor. So article 72 and 161 जहां पर president governor pardon करते हैं, ठीक है, for different आपके डेथ पेनल्टी या बाकी जो चीज है उसके लिए. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेसिडेंट गवर्नर का जो पावर दिया गया है अंडर 72 161. बट क्वेश्चन ये है, जस्टिस पर्दीवाला ट्राई टू फाइंड, इज देयर एनी ways or is there any cases where the Supreme Court has laid down that there is a judicial review for the pardoning power of the governor or Supreme Court? Now, why Justice Pardiwala tried to do that? Justice Pardiwala tried to do that in that fashion. The reason is very simple. Because, as I told you, it's a matter of titular head and his action is under scanner. So, ये कोई दूसरा constitutional authority नहीं है जिसका मैं judicial review कर रहा हूँ. So, इसीलिए Justice Pardiwala tried to justify his claim that can Supreme Court review the action of a titular head?
Or is there any example that has been said by Supreme Court earlier that can be repeated here? Are you understanding? So in that case, Justice Pardiwala, when he tried to find out few examples, he found out few cases. One is Epuru Sudhakar, another one is Maruram. Okay, these cases he found out. Now, when he found out these cases, Epuru Sudhakar and then your Maruram, these are all Article 72 and Article आपके 161, ठीक है, और पुराना सेक्शन जो आता है आपके सीआरपीसी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 433 434 दिस टाइम आल्सो एक ये आता है, मैं एग्जैक्ट में 433 34 एक बार चेक कर लेना, पुराना सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये जो पावर है गवर्नर का, दैट इज गिवन अंडर 72 161, under Epuru Sudhakar, it has been mentioned, no, though it's a power, prerogative power, okay? In that sense, though it's a prerogative power, मैं आप लोगों को दिखाता हूं वो पोर्शन, जैसे मारूराम दिखाया गया, आर्टिकल 172 and 161. मारूराम is a very famous case under article 72 161 and section 433 या 434 ऐसा कुछ है under CRPC, उसके regarding very very famous case. Okay. The rule of law under our constitutional order transforms all public power into responsibilities. Okay. And as a result, this power is also under the scanner, whatever the governor has. Okay. Likewise, Epuru Sudhakar. Okay. Indira Sahni में भी judicial review की बात है, but Indira Sahni is not as of our much importance. Okay. Our main importance is all about your. One second. मैं Epuru Sudhakar को दिखाना चाहता हूँ. Epuru Sudhakar is a very famous case. मैं ऊपर चला गया क्या ये केस सब मेरे अंदर तो Epuru Sudhakar ऊपर था. Indra Sahni, Maruram, Samsir Singh. No, did I miss it? नीचे होगा शायद. Okay, but nonetheless, Epuru Sudhakar is one of the cases under Article 72 and 161 in both the cases. Okay, where it has been laid down. Okay, para 339. अच्छा, Epuru Sudhakar 339 में. One second. 336, 337, 338 एक और, या 339. देखो ये इंपॉर्टेंट केस होता है, ये प्रेरोगेटिव ऑफ सॉवरेन पावर. क्यों? क्योंकि इफ गवर्नर और प्रेसिडेंट इज एक्टिंग इन दैट केस, then it's a sovereign or prerogative power. Okay, and when sovereign or prerogative power is challenged in the court, it is subject to judicial review or not. That has been discussed here in Epuru Sudhakar. आप लोगों के Epuru Sudhakar केस को मैं एक बार देखने के लिए बोलूंगा, बट नॉनदलेस लास्ट ईयर क्लैट पीजी में आपके आर्टिकल 72 एंड 161 से क्वेश्चन आया था. तो Epuru Sudhakar माइट नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट इस केस का नाम याद रखना फॉर योर क्लैट पीजी रेफरेंस, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है अंडर आर्टिकल 72 161 के लिए. ठीक है, Epuru Sudhakar में से देखो, Epuru Sudhakar में it held that exercise of every prerogative power is subject to the rule of law, and the rule of law can't be made subservient to the political expediency. You are understanding how the action of the governor and the president both are under the scanner of the law. Okay, so this very part, okay, so it also held that exercise of any prerogative power can't be placed in straitjacket formula, and manageable standards would vary depending on the nature of the power. So it changes on the facts to fact circumstances, whatever is there, but the manageable standard needed to be mentioned. You can't really go and enter into every action of the governor and you start question that. You can't really do that. There are certain parameters that can only be looked into while questioning the decision of governor and president, because here we are talking about titular heads, right? So that's why it's very important in that case. So what I mean to say,
by mentioning Maruram, by mentioning Epuru Sudhakar, yeah, you can say by mentioning AK Call. These are the cases. This case, ये दो out of all these cases, आप लोग को ये दो तीन केस बहुत relevant है, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया. The purpose of mentioning these cases are nothing but, Justice Pardiwala trying to say, any prerogative power of governor or sovereign power of the governor can be subject to judicial review, because he is trying to basically put a question mark on Article 200 subjective satisfaction. Can he judicially review that or not? That's why he's trying to find out any other precedents that has been laid down regarding other provisions. Okay, that's what he is trying to do. Clear? Understood? So by saying that, Justice Pardiwala tried to find out the very common similarity between prerogative powers or the sovereign powers under different provisions. Are you people able to understand? Are you people able to understand whatever I'm saying with you? Are you people able to understand whatever I'm saying to you? Okay. Now, regarding this aspect, हम लोग जाते हैं अभी उसको पढ़ते हैं दोबारा. So this is the very important part under this issue that Justice Pardiwala tried to find. Justice Pardiwala, other than finding the similar provision where Supreme Court has any such judicial review or not, another question came into Justice Pardiwala, this is Article 361. अगर आप Article 361 के बारे में आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, you'll be able to see it. Why this question came into picture, you will be able to understand. Article 361. Okay, एक second. Yeah, Article 361, not a. So Article 361 is a very important article in this case. Sir, why Article 361 क्यों important है इस केस में? Article 361 important इसीलिए है, अगर आप देखोगे, क्योंकि Article 361 में एक इम्यूनिटी दिया जाता है प्रेसिडेंट गवर्नर को. मतलब क्यों इम्यूनिटी दिया जाता है सर? Because of their symbolic head or titular head. So president or governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. So you very well understand 361 talks about a very important thing कि उनके ऑफिस और ड्यूटी के चलते whatever the action president and governor is taking, उनके एक्शन he is not answerable to any court. अभी समझ पा रहे हो क्यों आर्टिकल 200 और इसके साथ कनेक्शन बैठ रहा है? आर्टिकल 200 में सेकंड प्रोवाइसो टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 200 सेकंड प्रोवाइसो टॉक्स अबाउट द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर. आर्टिकल 200 talks about subjective satisfaction of the governor. What's it? कोड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकंड रुका. Yeah, done. So under Article 200, proviso talks about the subjective satisfaction of the or the discretion that has been given to the governor in relation to any bill which is derogating the power of the High Court, then send it for presidential reconsideration. Now the question that is coming, under Article 200, governor is performing his duty under what office permits him to do? So there is a question that is coming to Justice Pardiwala is that के Article 361 के अंदर तो immunity दिया गया है, तो अगर एक्शन गवर्नर ले रहा है, then action should be, he must not be answerable to the action.
Okay, must not be answerable to the action. So Article 361 के चलते governor must be protected. Whatever the action he takes under Article 200, either he did not respond to the bills by giving assent or send it for presidential consideration, whatever the action, because Article 361 में बोला जा रहा है. Okay, but here Supreme Justice Pardiwala tried to find out another very important case, that this Article 361 is about the individual capacity, okay? And it's quite different than the other power and the constitutional power and action that has been given to president governor, okay? So, Article 361, no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against president. ये simple है, no civil proceeding shall be instituted in during his term. So, civil और criminal proceeding दोनों institute नहीं हो सकता है governor के against में, ठीक है? और president के against में. Now, the most important thing that needed to be understood here, he referred a case, okay? He referred a case, and that case is quite interesting here, okay? One second, kahan gaya case? Okay. He referred another case, okay? To basically negate the idea of immunity that has been given to governor under Article 361. Okay. So he referred Rameswar Prasad case. Okay. In Rameswar Prasad case, it has been mentioned, dekho, the personal immunity from answerability provided in Article 361 does not bar the challenge that may be made to their action. Under law, such actions, including those actions where the challenge may be based on the allegations of malafide, are required to be defended by Union of India or the state, as the case may be. Even in cases where personal malafide are alleged and established, it would not be open to governments to urge that the same cannot be satisfactorily answered because of immunity contract. So it's a very simple thing. जो पर्सनल इम्यूनिटी दिया जा रहा है आर्टिकल 361 के अंदर गवर्नर के चलते, इसके लिए गवर्नर के एक्शन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. गवर्नर एक्शन इज कमिंग अंडर द जुडिशियल, coming under the judicial review. Okay. Now this very part actually cleared out all the aspect. Okay, this very part cleared out all the aspect. अब 361 का इम्यूनिटी है नहीं. एज ए प्रेरोगेटिव पावर गवर्नर का एक्शन जुडिशियल रिव्यू हो सकता नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है. सो वॉट एवर द आर्गुमेंट दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड in relation to no judicial review of governor's power have been negated by Justice Pardiwala first. तो जस्टिस पर्दीवाला उनको पहले नेगेट कर दिया. ठीक है. अब जस्टिस पर्दीवाला के पास एक सिंपल ये था कि आर्टिकल 200 के अंदर क्या जुडिशियल रिव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना हद तक मिलेगा, what is the limit. Okay, now we are going to get into this particular part. All of you are able to understand? Any query? Any query? Let me check if you people have any query or not. Now the most important thing regarding this case, I'm just telling, I have told in the very beginning, this case I am talking in relation to 5 important cases that I have talked about. इसके चलते मैं ये केस बता रहा हूं, तो इस केस को जरूर देखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डाउन द टाइम. ओके, ठीक है. अच्छा, अभी इस केस के बारे में हम लोग दोबारा बात करेंगे. ओके, if I'm not able to see your messages, don't, you can type it out. Okay, no problem, because I am doing it via Zoom, so sometimes I'm not able to see your message. Okay, तो इसके चलते आप ये मत सोचना कि आपके मैसेज नहीं देख रहा हूं मैं, ठीक है. And I saw one of the student has retracted the message, so please feel free to message. I'll check it when I am going to check it, because via Zoom I'm not able to see. I don't have two screens simultaneously with me, ठीक है.
तो मेरे सामने दो स्क्रीन नहीं है, मैं एक ही स्क्रीन से पढ़ा रहा हूँ और इसमें मेरा जूम खुला हुआ है, जूम आई एम शेयरिंग दिस, सो आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट। ओके, अगर कुछ चीजें आप वहां पर पूछ रहे हो, सो आई विल कम टू योर क्वेश्चन, डोंट वरी, आई विल टेक योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट, डोंट वरी, ठीक है? सो डोंट रिट्रैक्ट योर मैसेज, एनीथिंग दैट यू वांट टू ट्राइंग टू से टू मी। अच्छा, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के व्हाट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, आर्टिकल 200 के अंदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉरी, आर्टिकल 200 के अंदर कितना चीजें दिया हुआ है, ठीक है? हाउ मेनी व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड द सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू पैरामीटर्स दैट हैव बीन लेट डाउन फॉर आर्टिकल 200, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ वी हैव सीन ऑल द थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर दिस एस्पेक्ट, ठीक है? So one thing under Article 200 judicial review is very much possible. Now, then Justice Pardiwala went in to find out the international cases to support his claim. Regina versus Prime Minister. These cases are not needed to be read in that case. Baker versus Carr, and then some part of the comments were saying this. Okay, these cases are okay. Now, then Justice Pardiwala tried to find out, okay, the three very important things, that Hoist chemicals, okay, and this BK Pavitra and Kesari Hind. In all the three cases, where the most important part is that all the three cases kahin na kahin limited the scope of judicial review, and Hoist chemicals and your BK Pavitra, in both the cases, there is no justiciability of the action under Article 200 that can be given. Both the cases have been negated by Justice Pardiwala, Hoist Chemicals and BK Pavitra. एंड ये दोनों केस को नेगेट करने के बाद, ठीक है, उसका रीजन ये दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर हम लोग जो बात किए कि गवर्नर हैज द पावर टू जुडिशियल रिव्यू, एंड साइमल्टेनियसली हॉइस्ट केमिकल्स एंड बीके पवित्रा, हम लोग लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात किए थे, दे did not follow the steps of Samser Singh, which is a larger bench. तो शमशेर सिंह का स्टेप जो था, they did not follow it. They tried to give their own opinion regarding the Article 200, and that's why those cases of lower benches have been sidelined. Because Shamsher Singh, MP Police, they have written it down regarding Article 200 scope and what is the scope parameters under which judicial review can be given. ठीक है, तो Shamsher Singh and MP Police, these two cases have been taken, and Hoist Chemicals and BK Pavitra, those two cases have been sidelined for the one single reason, because their lower bench did not follow the precedent of Shamsher Singh. ठीक है, क्लियर? दैट इज द इंपॉर्टेंट केस। इसीलिए मैं बीके पवित्र हॉइस्ट केमिकल्स मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में इसके बारे में मैं चीजें बताया था, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट हैव बीन लेट डाउन इन दिस केस regarding the judicial review. Okay, what are the parameters that have been laid down in this case regarding the judicial review? Okay, हम लोग इसको पहले पैरामीटर्स देखेंगे और मैं उसको एक एक करके समझाऊंगा व्हाट आर द थिंग्स आर देयर। ओके, एक सेकंड। कैसरी हिंद एंड दिस पार्ट। ओके ओके, एक सेकंड। Article 254. अच्छा, how many of you are aware about Article 254 and what is the article of Article 254? आप बता सकते हो Article 254 में क्या आता है, and Article 254 के साथ इसका कनेक्शन क्यों आता है? Can you tell me? Article 254 क्या आता है Article 254 में? Article 254 talks about the doctrine of what? Doctrine of, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन आता है आर्टिकल 254 के अंदर। आप बता सकते हो कौन सा डॉक्ट्रिन आता है? खोल के देखो एक बार, आर्टिकल 254 के अंदर क्या कौन सा डॉक्ट्रिन आता है, बताओ चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है? टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द
Very important part needed to be seen. Okay. So मैं कुछ चीजें आप लोगों को पहले बताऊंगा एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. मैं पहले क्यों कंक्लूजन से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इसके रीजन है so that you will be having a clarity why this particular conclusion has been drawn. ठीक है, and how it is drawn उसके बारे में बात करूंगा. So this article paragraph 367 is a very important paragraph जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So please very careful regarding this aspect. Okay. So judicial review of power under आर्टिकल 200, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, so this is very simple, yet few things need to be understood very clearly. Where the governor reserves a bill for consideration of the president in his own discretion and contrary to the aid and advice tendered to him by the state minister, it shall be open to the state government to assess such an action before appropriate high court of this court. Such challenge can broadly be made on the following grounds. Okay, where reservation on the, I'll explain each and everything. मैं explain करूंगा, मैं read out कर रहा हूं, मैं explain करूंगा आप लोगों को, सारा चीज explain करूंगा करके. Where the reservation is on the ground that a bill is of the description falling under the second proviso, it may be assailed on the ground that the bill of any provision therefore does not derogate from the powers of High Court so as to endanger the position of which Constitution to fill. The governor reserving the bill shall be expected to provide clear reasons and point to specific provisions of the bill in his opinion at the second proviso. Then only it can be done. Okay. Now देखो, आर्टिकल 200 के अंदर हम लोगों के पास जो चीज है, वॉट एवर वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 200, देयर आर 3 ऑप्शंस दैट आर गिवन. ओके, आर्टिकल 200 के अंदर 3 ऑप्शन दिया जाता है. 3 ऑप्शंस दिया जाता है. एक, one option is regarding assent, one option is regarding the withhold and return, and third option is regarding your send it for presidential reconsideration. Okay, now देखो, if it is sent for presidential reconsideration, okay, contrary to the aid and advice tendered to him. Now it's very important, as per article 200 हम लोग last class में देखे थे, governor has to act within the aid and advice of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में जाके वॉट एवर एडवाइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके अगेंस्ट में जाके गवर्नर एक बिल को प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए रख लिया, जो यहां पर हुआ है इस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में. बट स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में एक बहुत सिंपल चीज हुआ है कि इट्स अ मैटर ऑफ रिपग्नेंसी का एक रीजन दिया गया था. ठीक है, क्योंकि दिस बिल इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, एज ए रिजल्ट repugnant, this bill is repugnant to the union list. The state bills regarding the universities are repugnant to the union bills. As a result, governor send it for presidential reconsideration. Article 254 के बारे में जो मैं बात कर रहा था, Article 254 is nothing but it is regarding the repugnancy. And कोई भी state law अगर repugnant होता है union law के अंदर, that state law to the repugnancy, to the extent of repugnancy, it will be invalid, जो आप लोगों को पता है. अब मुश्किल ये है कि अगर कोई स्टेट लॉ प्रेसिडेंट असेंट के बाद वो लॉ आता है, इन दैट केस दो इट इज रिपग्नेंट टू द सेंट्रल लॉ, इट विल स्टिल प्रिवेल, दो इट माइट बी रिपग्नेंट बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंशियल असेंट. इसी के साथ प्रेसिडेंशियल असेंट आर्टिकल 201 का कनेक्शन होता है. ठीक है, दैट्स व्हाई आर्टिकल 201 के साथ आर्टिकल 254 का कनेक्शन होता है. ठीक है, अब बात ये आ रहा है कि सपोज स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेंडर एडवाइस टू गिव असेंट टू द बिल, व्हिच इज अ वेरी जनरल बिल, बट गवर्नर एक्टेड अगेंस्ट इट, सेंड इट फॉर प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन. इन दैट केस state of Tamil Nadu or any state can challenge this particular decision of the governor. कब? जब रीजन दिया गया है. कब? That bill of any provision does not derogate the powers of High Court. Because if you see the second proviso of the Article 200, which is very much visible to all of you, if you see it,
ठीक है, आपके पास वेयर टेक्स्ट अगर है कि कोई बिल अगर डेरोगेट कर रहा है, इन दैट केस दैट बिल हैज टू सेंड फॉर प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन। अगर वो बिल डेरोगेट नहीं कर रहा है तो देन हाई कोर्ट में उस बिल के बारे में गवर्नर का जो डिसीजन है, सेंड इट फॉर प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन, कैन बी चैलेंज। ठीक है, उसके साथ साथ गवर्नर नीड टू रिजर्व द बिल। गवर्नर नीड टू रिजर्व द बिल विद स्पीकिंग ऑर्डर विद ए वैलिड रीजन। रीजन देना बहुत जरूरी है। क्यों रीजन देना जरूरी है कि क्यों आप उस बिल को प्रेसिडेंशियल रिकंसिडरेशन के लिए सेंड कर रहे हो? आपका रीजन वैलिड होना चाहिए। इट इज नॉट आर्बिट्ररी और मैलाफाइडिंग। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, so the question of being purely of legal nature would be completely justiciable, and the competent court would be, after proper adjudication, fully authorized to approve or disapprove such reservation by the governor. ओके, एंड ये देखो, अगर गवर्नर का और प्रेसिडेंट का पावर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ रहा है, आप लोग एक चीज समझ नहीं पा रहे हो, मैं जो मिस कर चुका हूं आप लोगों को बोला नहीं, क्योंकि एनी constitutional authority, if any constitutional authority or office bearer they don't, public authority अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट एक रीट पेश करता है उस पब्लिक अथॉरिटी को वो काम करने के लिए। आई होप यू आर अवेयर, दैट इज कॉल्ड रीट ऑफ मैंडेमस। अभी चीज ये है कि सपोज हेयर गवर्नर इज एक्टिंग नॉट इन अलाइन विथ कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस गवर्नर को रीट ऑफ मैंडेमस सेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सुप्रीम कोर्ट इज इशूइंग रीट ऑफ मैंडेमस टू वन ऑफ द टिट्यूलर हेड्स, डायरेक्टिंग देम टू डू द एक्शन। आप बोलोगे सर होना ही चाहिए, काम नहीं कर रहा है तो पॉसिबल, बट दिस मैटर इज नॉट ए वेरी सिंपल थिंग टू बी डन वेरी वेरी इजीली। आप प्रेसिडेंट को रीट ऑफ मैंडेमस नहीं इशू कर सकते हो, गवर्नर को रीट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हो, दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को कर सकते हो। बट व्हाट जस्टिस पर्दीवाला हैज सेड कि अगर गवर्नर नहीं कर रहा है तो रीट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाएगा इन दैट केस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स द नेचर, the huge nature of this particular case. Second, where the reservation on account of the bill attracting any provision of the constitution wherein the assent of the is a assent of president is condition precedent, such as article 364A2, article 31, article 254(2), then governor is expected to make a specific clear reference to the president, properly indicating the reason for such reservation and inviting his attention as described to Kesari Hind. Such reservation can be assailed by the state government if the reference made by the governor either fails to indicate the reasons discussed above, and it is wholly arbitrary, irrelevant. In that case, that can be challenged. Okay, same thing. So you are very well understanding, if there is a situation कि president assent is absolutely mandatory, it is not coming under the second proviso, but there are certain articles in Indian Constitution where president assent in those bills are absolutely mandatory. Under Article 364A2, under Article 31A, Article 254(2), in all those cases where there are articles, these things, your presidential assent is mandatory. Government has to send it for presidential consideration. Now, if in this situation, governor is also expected to make a specific and clear reference. गवर्नर को फिर भी एक स्पेसिफिक क्लियर रेफरेंस देना चाहिए। अगर नहीं देंगे इन दैट केस, तब और हिज ऑर्डर और हिज रीजन इज इररिलेवेंट, मैलाफाइड और आर्बिट्ररी, देन इन दैट केस दैट इज such reservation liable to be set aside and purely of legal nature will be completely justiciable. आप सोच सकते हो, the parameters under which the governor is going to act is now very much limited. He has to act. The reason is, इसके बाद आपको अगर पता है ये नहीं पता, under Article 143, President has asked for Supreme Court after this particular judgment के आप लोग जो guidelines set किए हो under this particular case, whether it is how it is to be followed. How it is to be followed. It's a very important thing, na? President फिर Article 143
के अंदर बेसिकली under Article 143, President asked for the reference. Okay, Supreme Court के advisory reference चाहिए. That what is asked, because this particular judgment totally shaken how president and governor functions regarding the bills. Totally. Okay. Acha. Let me take any query if you have any. 1 second. Okay. मैं थोड़ा देख लेता हूँ. Sorry, I'm just. Okay. Now, coming to this part. Okay. अब देखो. What are the other things that I have mentioned? Where the reservation of a bill by the governor for the consideration of the president is on the grounds of peril to the democracy or democratic principles or on the other exceptional grounds. Okay. MP Police Navam Review में जो बोला गया था, then governor would be expected to make specific and clear reference to the president, properly indicating the reasons for entertaining such a belief by pinpointing specific provision in this regard. Okay. Now, in that case, governor's subjective satisfaction why the aforesaid consequence may ensue cannot be possibly curtailed or contained by taking recourse to constitutional courts of this country. Okay. But if it is wholly arbitrary, malafide, irrelevant, unnecessary, motivated by extraneous consideration, it can also be checked. But the thing is that understanding perils to the democracy or democratic principle, which is very important. इसका मतलब मैं बताता हूँ. Suppose स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल बनाया. स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल बनाने के बाद उस बिल में ऐसा एक बिल बनाया, सपोज आप सोचो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ. ठीक है. सो ऐसा एक बिल बनाया जो शायद स्टेट के गवर्नेंस के लिए एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए कोई बिल बनाया. ठीक है. या एक ऐसा टॉपिक के ऊपर ये करने की कोशिश कर रहा है स्टेट. ठीक है. दैट इज टोटली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर. In that case, if governor feels have the subjective satisfaction कि इस बिल को this bill has the tendency to or has the ground in relation to peril to democracy, he can send this bill to the presidential reconsideration. Second proviso can be activated. Okay. So second proviso can be activated in various terms. One, in relation to where powers of the High Court can be disregarded. Second, if there are presidential consideration is absolutely mandatory, like Article 31A, Article 364A2, Article 254, it's a matter of repugnancy, where in those cases, presidential reconsideration चाहिए, governor send करेगा. And if any cases where governor feels like it is against the or it is perils to the democracy, in that case also. In that case also, governor can send it for presidential reconsideration, but उसको reason देना पड़ेगा. And the reason must not be arbitrary or malafide in nature. Okay. So this is very important that also given. अच्छा. अब देखो. Reservation of bills on the grounds other than one mentioned above such personal dissatisfaction of the governor, political expediency, or any other extraneous or irrelevant consideration is strictly impermissible. So, for any reason other than whatever has been mentioned in the last three grounds, if governor send the bill for personal dissatisfaction, उसको लगा कि मुझे सेंड करना चाहिए बिल, दो डिस्क्रिशनरी. लुक एट दिस. आर्टिकल 200 में डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है या नहीं प्रोवाइसो के अंदर. द थिंग इज दैट इट इज वेरी लिमिटेड. ये 1, 2, 3 these 3 points under which governor can send the bill for presidential reconsideration. अगर in any other situation governor feels like टाइम डिले करना है, जो जनरली हो रहा है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में भी हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि आई एम of one political ideology, state government is another political ideology, मैं state government को अच्छे से function नहीं करने दूंगा, I'll not be able to run it properly. In that case, it is absolutely
impermissible under the constitution. Okay. Huh? That's how it is. The judicial review, how limited it is. The discretionary power that has been given, कितना discretionary power दिया गया है? 3-4 discretionary power दिया गया है बस. इसके बाहर कोई भी पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी डिस्क्रिप्शन पावर नहीं दिया गया है. ठीक है. अच्छा. Where the governor exhibits inaction in making a decision when the bill is presented to him for assent under Article 200, it's a matter of pocket veto, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. Such inaction exceeds the time limit has been prescribed to the Article 2 paragraph 250, जिसके बारे में हम लोग देखे थे. It shall be open to state government to seek a writ of mandamus. Pocket veto में भी writ of mandamus दे सकते हैं. गवर्नर के पास आफ्टर दिस पर्टिकुलर जजमेंट नथिंग इज देयर अंडर आर्टिकल 200. नथिंग. जो पहले इतना पावर था अभी कुछ है ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट टेकन एवरी पावर, एवरी ड्रॉप ऑफ पावर फ्रॉम आर्टिकल 200 इन रिगार्ड्स टू गवर्नर्स असेंट टू बिल. कुछ नहीं है. समझ पाए? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? ओके. अभी भी बहुत सारा चीज है, रुको. Where the governor reserves a bill for consideration of the president and the president in turn withhold assent thereto, it shall be open to the state government to assess such action before the court also. अब प्रेसिडेंट अगर withhold कर चुका है, मतलब 201 अगर फॉलो हो रहा है, in that case state can also assess the action of the president in that case. Okay. Now, but here justiciability and judicial review is very much limited also. कहाँ कहाँ है? Where state bill has been reserved by the governor for consideration of the president on the ground that assent of the bill is required for the purpose of making the bill enforceable for securing some immunity. Therefore, in such cases, withholding the assent by the president would be justiciable to the limited extent. Exercise of such power is an arbitrary and malafide manner. Owing to the political nature of the assent of the president in these categories of the bill, the court would impose its self-restraint. Now, here one of the very important things. मैं थोड़ा बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या चीज है. जो जुडिशियल रिव्यू आपके गवर्नर के मामले में है, वो प्रेसिडेंट के मामले में अंडर आर्टिकल 200 थोड़ा कम है. क्योंकि अंडर आर्टिकल 200 में प्रोसेस क्या होता है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ. ठीक है. एक बिल प्रेजेंट हुआ गवर्नर के पास. गवर्नर के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास. ठीक है. एंड गवर्नर इज गोइंग टू एक्सरसाइज द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन. ओके. सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ये सेकंड प्रोवाइसो क्लॉज के अंदर आ रहा है. एंड देन प्रेसिडेंट के पास गया. प्रेसिडेंट के पास जाएगा, आर्टिकल 201 एक्टिवेट होने वाला है. जब आर्टिकल 200 एक्टिवेट होगा प्रेसिडेंट के पास, एक चीज है, प्रेसिडेंट कैन असेंड द बिल और सेंड इट बैक टू अगेन वाया गवर्नर टू द लेजिस्लेचर. ओके. अब लेजिस्लेचर के पास जब चला गया, दे हैव द certain time period via which they have to pass the bill again and send it to again governor. Same process is going to follow. Now the thing is that here, after when the bill is presented to president, in that case, if there is certain situation where the bill itself is suffering from the vice of repugnancy. आप बोलोगे सर रिपग्नेंसी क्या है? रिपग्नेंसी अंडर आर्टिकल 254, अंडर आर्टिकल 254 रिपग्नेंसी तब होता है सपोज देयर इज ए मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. देयर इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. ओके. देयर इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट जहां पर सेम लिस्ट, मतलब एक टॉपिक है जो दोनों लिस्ट के अंदर आ रहा है. स्टेट और यूनियन दोनों लिस्ट में नहीं, एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना रहा है. ठीक है. वन ऑफ द टॉपिक इज एजुकेशन. एजुकेशन सिर्फ कॉन्कर्ड लिस्ट में नहीं होता है. एजुकेशन आपके तीनों लिस्ट के अंदर आता है, एंट्री 1, एंट्री 2 एंड आपके लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. सो कोई भी टॉपिक जो कॉन्कर्ड लिस्ट में अंदर आता है, इन दैट केस स्टेट का भी लॉ है, यूनियन का भी लॉ है, एंड इफ एनी सच लॉ और स्टेट लॉ इज रिपग्नेंट टू द सेंट्रल लॉ, इन दैट केस ये बिल इतना घूम के आया. सपोज एक बार बिल को सेंड किया, सेंड करने के बाद बिल घूम के आया, फिर गवर्नर के पास, फिर प्रेसिडेंट के पास गया. प्रेसिडेंट फिर देख रहा है इस बिल में अभी भी रिपग्नेंटी है सेंट्रल लॉ से.
There is a possibility. In that case, president के power थोड़ा ज्यादा होता है under Article 200, and court has very limited judicial review, जो गवर्नर के मामले में है, प्रेसिडेंट के मामले में बहुत कम होता है. Are you understanding? Are you understanding this particular aspect? So this thing needed to be understood very carefully. Okay, this thing needed to be understood very carefully. Achha. So that's what has been talked about. When a state bill has been reserved by the governor in his discretion for the consideration of the president on the ground that the bill appears to be patently unconstitutional for placing in the principles of representative democracy in peril, withholding of assent by the president would in ordinary circumstances involve purely legal constitutional question, therefore be justiciable without any impediments. अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास दोबारा गया और जाने के बाद लग रहा है कि वो बिल एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रेसिडेंट कैन होल्ड दैट बिल ऑल टुगेदर. ठीक है. It would be prudent for the president to obtain advisory opinion under Article 143. 143 अंदर प्रेसिडेंट को एक एडवाइस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इस बिल को एक्ट बनाए या ना बनाए. सो आप अगर गवर्नर के पावर देखोगे और प्रेसिडेंट के पावर देखोगे, दोनों में बहुत अंतर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू के डिस्क्रिप्शन के बारे में. ओके, where the president exhibits inaction in making a decision when a bill presented for him such exceeds the time limit paragraph 391, that is also seek of writ of mandamus. तो देखो, पॉकेट वेटो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, पॉकेट वेटो गवर्नर के पास भी नहीं है. इन दोनों केसेस में ही पॉकेट वेटो नहीं है, दोनों के पास नहीं. बट प्रेसिडेंट के पास ओके वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट के पास जो immunity है, immunity in relation to Article 200 है, that is quite broader than the immunity that has been given under Article 200. ठीक है, बहुत ज्यादा immunity है. Okay, now this is the very important thing. अच्छा, अभी क्या हुआ है, where the bill which is under the consideration is pertaining to provision of the constitution where primacy has been given to the union government in taking decision keeping in consideration the desirability of having certain uniform standard of national policy, then the limited ground of judicial review based on arbitrariness and nullifiedness. So whatever we have read so far, कि आप अगर देखोगे गवर्नर का जो भी एक्शन है आर्बिट्रेरीनेस नलिफाइडनेस के हिसाब से ये होगा, whereas in relation to president, it is very limited that I have talked about. Okay. And where a bill under a consideration to the governor, in that case, if governor acted contrary to the aid and advice, then in exercise of the judicial review, the court would be competent to look into the reasons of withholding the assent. So, agar contrary to the assent काम किया गवर्नर, so governor has to act within the aid and advice. So इस मामले में गवर्नर को बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली. दैट्स व्हाई द प्रेसिडेंट मुर्मू आस्क्ड फॉर द रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143. सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस मांगे हैं कि कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. ओके, अच्छा, आर्टिकल 200 के 1 के अंदर ये था आपके इस रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में, व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू. अंडर आर्टिकल 200 इज वेरी सिमिलर टू अंडर आर्टिकल 200. ठीक है, ये पहला इश्यू के साथ बहुत सिमिलरिटी आता है, क्योंकि मैं आपको जो दिखाया कि व्हाट इज द प्रेसिडेंट रोड मैप रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट रोड मैप, ठीक है, that needed to be understood. So president roadmap is very clear. If any bill presented to the president can only have two options. Okay, either three options likewise. Okay, three courses. Assent to the bill, withhold the bill, और assent return to the bill. ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होता है, गवर्नर के पास तीन ऑप्शन होता है. तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है. प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, असेंट कर सकता है एंड विथहोल्ड रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, गवर्नर के तरह प्रेसिडेंट को भी कोई पॉकेट वेटो नहीं मिलता है एंड इट इज वेरी सिमिलर. ठीक है, बट प्रेसिडेंट हैज certain other consideration that needed to be taken because there are matter of repugnancy that president need to look into, and in matter of any law which is unconstitutional, in that case president can't really give its assent so easily like governor. ठीक है,
सो प्रेसिडेंट कुछ कुछ लॉ को ज्यादा टाइम तक होल्ड भी कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ। ऐसा नहीं पॉकेट वेटो मतलब टोटल इनएक्शन, नहीं। प्रोसेस लिया गया and then with specific reason it has been delayed, it has to be communicated also. So that's what the 6 talks about, ठीक है। 6 नंबर इसके बारे में बात करता है। Now this is the whole thing regarding your this particular case, ठीक है। इसके उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए। अभी जो चीज आपको पढ़ना है वो है कि ये 6 जो चीजें हैं अच्छे से पढ़ो, ठीक है। टाइमलाइन क्या क्या दिया गया है जिसके बारे में बताया हूँ। आर्टिकल लास्ट इश्यू में भी कुछ टाइमलाइन है जो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते हो, ठीक है। बट इसको प्यार से देखो, इस केस को इम्पॉर्टेंट है ये केस, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड very important. And by that, I'm going to end this case and I'm going to talk about a few other cases in the coming classes. Okay. Be there. Thank you, all of you. See you again. And if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to it. And thank you. Thank you. See you again.